infrastructure company secured a 351 crores bridge project under the Agra Gwalior Highway, increasing its order book and moving into more complex construction work. With a new steel grider facility and better finances after a recent fundraise, it expects steady growth and improved margin. Meanwhile, a coffee manufacturer saw strong growth in Q1 with revenue more than doubling. New capacity and better packaging facilities supported by this increase, and future plans including adding a freezer dried coffee plant and entering new markets. Both the companies are expanding steadily, one in infrastructure and the other one in beverages, through capacity upgrades and new projects. हाय एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ नॉइस मेकर, जहां पर हम चीजें सिंपल रखकर फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो कि अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती बट दे हैव अ रियली गुड ग्रोथ पोटेंशियल इन द लॉन्ग रन। आई एम सेजल अग्रवाल, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट डेस्वेलाडो एडवाइजरी, और आज हम बात करेंगे ऐसी ही दो कंपनीज के बारे में जो अपने बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही हैं एंड इन द करंट ट्रेंड्स रिमेन इंटैक्ट, दे माइट कंटिन्यू टू ग्रो इवन फर्दर। बट बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, फर्स्ट लेट्स सी द डिस्क्लेमर. So any discussions, facts or writings provided here are for informational purposes only and do not constitute any buy or sell recommendation. So please conduct your own due diligence before making any investment decision. Now let's move to the first company. The first company is GPT Infraprojects Ltd, which mainly builds infrastructure projects like roads, bridges, railways, and apart from this, the company also makes concrete sleepers which are used in railway tracks. The company has secured a 351 crores contract to construct a bridge including a cable-stayed section over the Chambal River as a part of Agra Gwalior Greenfield Highway Project, and with this win, total order inflow for FY26 stands at 396 crores, taking the overall order book to 3,852.65 crores. In scale of engineering intensive project के through, कंपनी का क्लियर शिफ्ट दिखता है towards more technically complex contracts. Now this transition has been enabled in part of stronger financials following the 175 crores capital raised by QIP, which is Qualified Institutional Placement, and QIP के बाद क्रिसिल ने कंपनी का क्रेडिट रेटिंग A- से A तक अपग्रेड कर दिया है, जो कि अब अलाउ करता है for the company to bid for larger infrastructure projects. To support execution, GPT Infra has established a steel grider facility in Hooghly, और ये facility in-house component supply enable करेगी, reducing external vendor dependence and helping in cost control. Project execution is scheduled to begin in H2 FY26 and is expected to support company's revenue growth guidance of 20 to 22% for the year. EBITDA margins 13% से ऊपर रहने का estimate है, held by 6 to 7 crores की expected finance cost reduction and backward integration savings. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट ओनली एड्स टू द शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बट ऑल्सो एनहांसेस जीपीटी इंफ्रा's फ्यूचर बिडिंग एलिजिबिलिटी, contributing to more stable revenue and profit visibility over time. फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY25 में कंपनी रिपोर्टेड 16.7% year-on-year growth in revenue from operations, rising from 1018 crores in FY24 to 1188 crores. Also, the company ended the year on a strong note with the EBITDA margins declined slightly to 11.9% from 12 to 5%, indicating moderate cost pressure, and net profit improves to 6.7%. Looking ahead, company's Ghana sleeper facility is expected to resume commercial operations within next 1 to 2 months, or management has guided for sleeper related revenue of approximately 150 crores in FY26, with EBIT margins projected in 15 to 16% range. अब ये restart नॉट ओनली मार्जिन्स को इंप्रूव करेगा बल्कि एग्जिस्टिंग असेट्स का यूटिलाइजेशन भी बेटर होगा व्हाइल आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन. एंड सेपरेटली द कंपनी हैज आउटलाइंड अ केपेक्स प्लान ऑफ 35 to 40 crores फॉर FY26, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन टनलिंग एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी अपग्रेड्स. इस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कंपनी के टेक्निकल क्रेडेंशियल्स को स्ट्रेंथन करना ताकि वो कॉम्प्लेक्स और हायर टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए क्वालिफाई कर सकें. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड कंपनी. So Vintage Coffee and Beverages Ltd basically makes and exports instant coffee, instant kiggery and other drinks.
It also creates customized products for different brands through private labeling based on what each customer needs. Now, the company has posted strong Q1 FY26 performance where the revenue stood at 101.6 crores, more than double the previous year's figure, and net profit rose to 14 crores, registering over 3 times year-on-year growth. This impressive growth mainly driven by higher production capacity and increased demand across domestic and export markets, even though this is typically considered a lean quarter. Operating profit also rose sharply to 17.24 crores, reflecting better capacity utilization and a wider project reach. कंपनी का प्लान है मार्च 2026 तक और 4500 MTPA की स्प्रे ड्राइड और एग्लोमेरेटेड कैपेसिटी ऐड की जाए, टेकिंग द टोटल कैपेसिटी टू 11000 MTPA, एंड अ न्यू पैकेजिंग फैसिलिटी नियर हैदराबाद इज ऑलरेडी ऑपरेशनल. कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ये कैपेसिटी कंज्यूमर पैक एक्सपोर्ट्स में 25% तक बूस्ट देगी एंड सपोर्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट एज वेल. इन एडिशन, if the proposed 215 crores equity raise goes through, the company intends to establish a 5000 MTPA freeze-dried coffee plant by FY27. अब ये मूव प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री का सिग्नल है और ग्लोबल मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट मिक्स को डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प करेगा. लुकिंग अहेड, कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन द प्रीमियम कॉफी सेगमेंट एंड दिस विल बी ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड फ्रीज ड्राइड कॉफी प्रोडक्शन एंड हायर कंज्यूमर पैक वॉल्यूम्स इनेबल्ड बाय न्यूली commissioned automated packaging line. ये शिफ्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट मार्जिन्स इंप्रूव करना एंड टू बिल्ड डीपर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद बायर्स लुकिंग फॉर ब्रांडेड एंड हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स. If these premium offerings scale well, they could help to reduce the reliance on bulk sales and gradually enhance overall realization per unit. कंपनी का ये भी बिलीफ है कि प्रीमियम पोजिशनिंग से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बेटर बनेगी. And on the geographical side, company is actively exploring new markets such as US, New Zealand, Australia, while continuing to strengthen its base in Middle East, Europe, Russia and West Africa. साथ ही रिसेंटली लॉन्च प्रीमियम कैफे लॉन्च के थ्रू कंपनी ने रिटेल स्पेस में भी एंट्री ली है, गिविंग इट अ डायरेक्ट रूट टू एंगेज विद हाई एंड कस्टमर्स, बिल्डिंग ब्रांड रिकॉल. Now let's review some of our previous picks which we covered in our previous Noisemakers. So first we have Gabriel India Limited, which is up by 17.6%. Then Ahluwalia Contracts India Limited up by 10.1%. Travenue Technology Limited, which is up by 22.6%. Aurionpro Solutions Limited, which is up by 9.7%. And last we have DEE Development Engineers Limited, which is down by 5.5%. And here is the QR through which you can access all the previous coverage companies which we covered recently. Now let's move to the summary of today's company which we covered in today's Noisemaker. First is GPT Infraprojects. The company has secured 351 crores order for building a major bridge including a cable style structure over the Chambal River under the Agra Gwalior Greenfield Highway Project. And next is Vintage Coffee and Beverages Limited, which delivered strong Q1 FY26 results with revenue up by 133% year-on-year to reaching 101.6 crores and PAT jumping to 13% year-on-year to reaching 14 crores, driven by expanded capacity and rising demand in both domestic and export markets despite the seasonal dip. And that's it for today's edition of Noisemaker. और अगर आपको ये breakdown informative लगा हो तो you can scan the QR code to read the full report, and we'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay ahead and stay informed.